Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uh, any questions from the previous week? So let's summarize the kind of stuff which we have been doing so far in the entire course. When we talk about data structures, there are many types of data structures, but primarily, so we can categorize them into two categories. One is whom we call that these are linear data structures, and the other category can be possibly termed as non-linear data structures. Yes, Nimra, you wanted to say something? Sir, from previous lab, yes sir, some from previous lab से बिग ओ जो था उसकी मुझे समझ नहीं आई थी सर जब हमने सर्कुलर क्यू किया था तब Okay, so आपने जो बिगो कंप्यूट किया था, तो व्हाट वाज द आंसर? आपके ख्याल में व्हाट वाज द सर बिगो मुझे ऑफ लगता था एडिंग एन कि उसका एलिमेंट, व्हाट वाज द बिगो ऑफ डिलीटिंग एन एलिमेंट? ओके सर जब सर्कुलर की बात हुई थी या सर्कुलर क्यू में सर्कुलर क्यू में मुझे लगता था कि बिग ओ एन होना चाहिए Okay, just hold for a while, and like after introducing this starting point, we'll get back to your question, right? ओके Uh, सर थैंक यू so I'm referring to two kinds of data structures. One is the category who we call linear data structures, and sometimes we call them that these are single dimensional data structures. And when we say nonlinear data structures, so primarily we mean that we are talking about something which is multidimensional. Under the category of single dimensional or linear data structures, the kind of things which we have discussed so far, so apparently there have been many things which we have discussed under this first bullet. So for example, we started with talking about arrays, we talked about linear search and binary search in the arrays, then we talked about linked list, which primarily was a single linked list. Then using arrays or linked lists, we were able to define certain kind of abstract data types, like we defined queue, we defined stack. Then we talked about doubly linked list. And then we talked about what we talked about priority queue. We talked about circular queue. So these were the kind of things which we kept on talking about, and almost all of them like fall under the first category, whom we are referring to as linear data structure or single dimensional data structure. Yes. Nimra? सर जब हम ये लिंक लिस्ट की बात कर रहे थे और हमने इंटरसेक्शन किया था यूनियन और इंटरसेक्शन एक असाइनमेंट थी तो सर इंटरसेक्शन में मुझे लगता था वो था तो लिंक लिस्ट का लेकिन मुझे लगता था इसका बिग ओ एन स्क्वायर होना चाहिए That's perfectly fine. So, okay. So when I'm saying that this is a data structure, I'm not referring to the complexity. Okay. I'm talking about the shape of the data structure. The shape of the data structure जो है ना, that grows in ओके one direction. So single dimensional array है, it grows in one direction. एक linked list है, singly हो, UW हो, तो वो एक ही line में grow करती है ना. Same happens with queue, stack, doubly linked list. So अब आप जिस चीज़ की बात कर रही हैं, there is the kind of operations which we can perform on these data structures. अब हर operation की अपनी cost है ना. Some ओके operations सर completion go one, even less than linear time. Some operations might be taking linear amount of time. कौन Some might be taking quadratic amount of time. Some might be taking exponential amount of time. Because you raised an important question. So for example, इससे मेरी एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है, which we probably did not really do in any of the labs, but you can try it on your own. Just imagine that you have been given an array, or you have been given a linked list containing n elements, and you treat that data structure as a set.
So set is another abstract data type, right? So set means set वही वाले set से जो आप मैथ में पढ़ते हैं, that set is a collection of unique elements, right? So if and we are talking about a finite set, so if there is a finite set having n elements inside it, you did certain kinds of operations on the sets in your previous lab, like you computed intersection, you computed union. So what about if you are supposed to compute the power set of that set? So and if you recall your basic knowledge of maths or set theory, you might be able to recall कि power set का मतलब होता है कि it is a set of all possible subsets. So अगर आपके पास एक finite set हो which contains n elements, so उस set के कितने possible subsets बन सकते हैं? 2 power n. Very good, right? 2 raised power n. So 2 raised power n is an exponential kind of complexity, ना? So जो n grow करेगा 2 की power n वाला जो function है, that will grow on a much faster speed or faster pace. ठीक है, तो उसका rate of growth will be much faster as compared to much compared to the size of the set you grow कर रहा है. तो set itself is a linear data structure, but the kind of operation which we are performing on it might be taking exponential amount of time, which is very high, might be taking some other function कुछ और time ले सकता है. So even on a single data structure, different functions might be taking different amount of time, and that's what we have discovered over the last few weeks. When I'm saying the types of data structures, so primarily I mean the shape or the structure of that particular type जिसके बात करें कि जितने हमने ब्लू में मैंने भी लिखे हैं, ये वो वाले जिनकी हम डिस्कशन कर चुके हैं अपने कोर्स में. So these are the kind of data structures which essentially grow in one dimension or one direction, right? So अब हम जिधर शिफ्ट होना चाह रहे हैं वो ये है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरा जो डेटा स्ट्रक्चर है ना वो एक ही डायरेक्शन या एक ही डायमेंशन में ग्रो करेगा ना. इट मे ग्रो इन मल्टीपल डायमेंशंस और मल्टीपल डायरेक्शंस. सो डायमेंशन एसेंशियली मीन्स डायरेक्शन. And when we say non-linear, that also means that it's not necessary, it's not mandatory for my data structure to stay in one line. So it may go in multiple lines. So that's the kind of thing which we want to discuss. Okay. Uh, so, so probably this is the kind of context which I wanted to build. Now moving to what Nimra is asking for, that we have been given a circular queue. Okay. So Nimra, आपकी जो circular queue थी वो आपने कैसे implement करनी थी? Were you supposed to implement using an array? No sir, through linked list. Through linked list. ठीक है, तो आपके पास एक node है that is connected to another node. This node is connected to another node. So there are n nodes. Each node is connected to another node, and the last node is connected to the first node. So let's say this is our first node. This is our last node. Okay. तो हमने करना क्या था कि अच्छा ये वाली जो भी शेप बन रही है, इसी अभी तक तो ये क्यू बनाने से पहले हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरीली वी हैव डेवलप्ड अ सर्कुलर लिंक लिस्ट ना. ठीक है, अब आप कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन कि आपका क्वेश्चन क्या था कि कौन से ऑपरेशंस कितना टाइम लेते हैं? सर मुझे लगता है कि जब हम सर्कुलर क्यू में अगर किसी भी नेक्स्ट नोड को एंटर कराते हैं तो उस टाइम बिग ओ जो है वो ओ एन होना चाहिए. तो क्या मैं सही हूँ? Okay, so essentially you are talking about the enqueue operation of the circular queue, no? है ना? Yes sir. और क्वेश्चन इज कि व्हाट इज इट्स कॉस्ट. Yes. तो बाकी लोगों के ख्याल में so for example if I add enqueue का मतलब है एडिंग अ नोड ना. तो आपने डिसाइड करना है कि आप इस नोड को येलो वाला मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको फर्स्ट नोड कहना चाहती हैं, या आप ये ब्लैक वाले नोड को फर्स्ट नोड सॉरी एंटरिंग पॉइंट करना चाहती है ना. तो आपने जिस साइड से ऐड करना है एलिमेंट्स को उस साइड से डिलीट नहीं करना, आपने दूसरी साइड से डिलीट करना है. राइट? एम आई राइट?
Yes. Yes. So, okay. So probably if we recall our basic linked list की शुरू वाले दिनों की implementation, so adding a node is pretty simple, right? Here. So if I add a node at Yes, first, sir. what I need to do is कि I create a new node और फर्स्ट को मैं कहता हूँ तुम इसको रेफर करो, इसको मैं कहता हूँ तुम इसको रेफर करो, और जो लास्ट है उसको मैं कहता हूँ तुम इसको रेफर करो, तो एसेंशियली ये वाला लिंक ड्रॉप हो जाता है ना. So जी. infinite number of in fixed number of or constant number of operations, I can add a node at the start. Okay, so if the number of operations over here are turning out to be constant, then I'm done in the I'm done in big O1, right? But that's not necessarily be your logic. Uh, so let's say you opt for an alternate way and you want to add the node at the last point, right? आप कहती कि नहीं फर्स्ट से मैंने डिलीट करना है, लास्ट में ऐड करना चाहती हूँ, है ना. सो इफ यू वांट टू ऐड इट हियर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप एक नया नोड ऐड करेंगी, आप लास्ट वाले पॉइंटर को कहेंगी कि आपने इसको रेफर करना है, जो एग्जिस्टिंग लास्ट नोड है उसको कहते हैं कि तुम्हारा नेक्स्ट जो है इट नीड्स टू बी हेयर, और जो नया नोड है उसका नेक्स्ट नीड्स टू बी हेयर, और एसेंशियली दिस नोड गेट्स ड्रॉप्ड. और ये वाला जो नया नोड है हमारा जिसको मैंने डबल बॉक्स किया है, दिस बिकम्स द लास्ट नोड. So probably in this case, if you are remembering that what was your last node, so even in this case you can add a node, or in our context you can enqueue a node in the circular queue in big O1. So what are your thoughts? बट सर अगर देखा जाए तो हमें लास्ट नोड तक जाने के लिए भी तो पूरी सर्कुलर क्यू को तो सर हमें ट्रैवल करना पड़ेगा ना, तो ऐसे तो लास्ट नोड हमें डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा. पॉइंटर बनाएंगे, एक हेड होगा और एक टेल होगा, तो लास्ट नोड उसका टेल होगा, तो टेल में हम ऐड करते हैं. तो चेंज भी तो होता रहेगा ना, क्योंकि जब हम कोई चीज इनक्यू करेंगे तो वो फिर मूव नहीं कर जाएगा. दाऊद और निमरा, आपको इनायत की बात समझ आई? What is trying to say? इनायत, can you repeat sir, what you said? यस सर, हम पॉइंटर बनाएंगे जैसे हम हेड बनाते हैं सर, उसी तरह हम टेल भी हम बनाएंगे. वो ये वाला पॉइंटर है ना? यस सर, ये उसका टेल होगा. ये उसका टेल है जिसको मैं लास्ट कह रहा हूँ. सो इफ सी दाऊद एंड निम्रा, इफ यू रिमेंबर द लास्ट नोड कि वो लास्ट नोड कहाँ पे था, तो फिर यू कैन इजीली ऐड ना. अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर इट इन दिस सर्कुलर फैशन, देन आपको नेक्स्ट नल तो कभी आएगा नहीं. ठीक है, तो आपकी सर्च Yes, आप sir. थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, इम्पॉसिबल नहीं होगी, बट बिकॉज यू कैन मैच द एड्रेसेस देन, कि जिसका नेक्स्ट फर्स्ट के एड्रेस के बराबर हो, जिसको फर्स्ट पॉइंट कर रहा है, देन यू कैन स्टॉप देयर. बट Yes, sir. सर मैंने टास्क भी इसी तरह ही किया है किस तरह? कि सर पहले इसको लास्ट नोड तक पहुंचाया है. मैंने कहा कि जब तक इसका जो लास्ट वाले का इट्स नेक्स्ट जो पड़ा है वो जब तक मेरे सेल्फ डॉट हेड के इक्वल नहीं आता तब तक तुम चलते रहो. इसका मतलब था ओके, मुझे पहले लास्ट नोड मिला. ठीक यस. है, ठीक है, ठीक है. साकिब, आज ना अटेंडेंस काफी सारी कम है. यस सर, अभी एक लड़के का हॉस्टल से मैसेज आया था कि नेट नहीं आ रहा. जमशेद का पता नहीं वहां पे आया है या नहीं आया ना. नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है वो मुझे भी ना तो एक सर किसी और का भी मैसेज आया चकदा से. सर ये चकदा में जो लोग हैं अस्सलाम नेट वालेकुम नेट अभी सर, ठीक अभी है. आ गया सर, आगे. ओके, अभी आया सर. आप लोग चकदा से कनेक्टेड हैं, जमशेद एंड मौजम? जी सर, चकदा ये से. सर हम चेक वैसे. ओके, ठीक है, वेरी गुड. जी सर, आप कह रहे थे अगर अटेंडेंस कम है तो. सॉरी, नहीं, आप वो कुछ कहने लगे थे कि अगर अटेंडेंस कम है तो. नहीं मैं करूँ, पता नहीं, आई डोंट नो, अनयूजुअल है. मेरे ख्याल में 40 के करीब हमारी अटेंडेंस, अभी लेस देन 40 है ना. 3 अकाउंट्स तो मेरे हैं, एक आपका, एक आपका, 2 मेरे हैं ना, तो प्रैक्टिकली 39 स्टूडेंट्स आर देयर ना. बिल्कुल ऐसे. ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो आए हुए हैं बच्चे ना, ये अभी बैठे हैं, ये बड़े सीरियस लोग हैं. साकिब, बिल्कुल सर ऐसे. इतनी सर्दी में, इतनी मुश्किल में इंटरनेट ना होने के बावजूद आ गए, तो अगर आप इनकी अटेंडेंस ले लें और इनकी अटेंडेंस को ना एक क्विज के बराबर काउंट कर लेंगे, दिस विल बिकम देयर क्विज 5. बिल्कुल सर, मैं अभी जो ले आए लेता दे हूं. विल गेट 10 आउट ऑफ 10 विदाउट सही टेकिंग है सर. ना, और जो नहीं आए दे विल गेट 0 आउट ऑफ 10. ठीक है, ओके सर, मैं तो आपने अभी मोमेंट की, इसी मोमेंट की ले लें, बजाय इसके कि लोगों को मैसेज जाना शुरू हो जाए कि आए ना. तो अभी जो ऐड हो रहे हैं वो ना करें उसमें ऐड.
जो हो जाती है सर। टेक द स्क्रीनशॉट। बिल्कुल सर, ले लेते। ओके सर, ओके। जो बच्चे क्लास में इसके 10 क्लास में लगेंगे। किरण क्या हुआ है? आई थिंक वो लोगों को बता रही है कि कुछ होने लगा है ना सर 444 हो गए। कोई बात नहीं, आप खत्म कर देना, आप स्क्रीनशॉट्स ले लें, बस बंद कर दें, जो उसके बाद 1 मिनट बाद आएगा वो ड्रॉप। आर यू डन? थोड़ा इसको साइज को बड़ा करें ना उसकी विंडो को, वैसे ही 43 हो गए फिर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये शायद गर्ल्स हॉस्टल में सर अभी मसला आ रहा है, क्योंकि सर अभी हमारे बाज रूम्स में आ रहा है, बाज रूम्स में नहीं आ रहा सर चकदा में। गर्ल्स में से कोई सर अभी हम इवन कनेक्टेड फ्रॉम द हॉस्टल? यस सर, हम मैं कनेक्टेड हूँ। आप गर्ल्स हॉस्टल से तो नहीं कनेक्टेड ना यार जमशेद? गर्ल्स यस सर, मैं गर्ल्स हॉस्टल से कनेक्टेड। ओके, सो वी हैव द प्रेजेंस ना, तो बाकी जो नहीं आ रही तो अगर एक कनेक्ट हो गया तो बाकी से भी हो जाना चाहिए था। सर हो गए सारे, कनेक्ट हो रहे हैं अभी थोड़ी अब देर तो क्विज के लिए हो रहे हैं ना? ओके सो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, ये अभी अभी इंटरनेट आया हॉस्टल में, पहले नहीं आ रहा था। और कितने लोग हैं फीमेल हॉस्टल में जो डेटा स्ट्रक्चर्स वाली क्लास है उसकी? 5। कौन कौन? हुर्मत इलियास, इफ्रा रहमान, मुताहरा और सफिया। ओके अच्छा सर मेरा भी है। ओके, आप भी हैं, ऑलराइट। जी सर। मूविंग फॉरवर्ड, तो आपने आई थिंक जिनके नाम लिए वो तो सारे ऑनलाइन है, जी सर, अभी कनेक्ट किए ना। यस सर, ऑनलाइन है। ओके चलें जी, इनको बेनिफिट ऑफ डाउट, इसके बाद स्टॉप करना है आप। ओके सर अभी कनेक्ट किया है। कोई बात नहीं। अच्छा दूसरा ख़ास तौर पे जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं और जो घरों पे रह रहे हैं ना, आई वांटेड टू से इनफैक्ट आई वांटेड टू रिक्वेस्ट अनदर थिंग कि आपको पता है कि आप तो वैसे घर पे पहले ही बैठे थे ना, या आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे, तो जो क्लासेस ऑन कैंपस चल रही थी वो भी सस्पेंड हो गई है ना। ये गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट से पहले ही सस्पेंड हो गई थी, बिकॉज हमारे ना 4 पॉजिटिव कोविड केसेस निकले हैं चकदा में, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर, और उसके अलावा कुछ और लोगों को खुद को नहीं हुआ लेकिन उनकी फैमिलीज में प्रॉब्लम आया हुआ है कोविड का ना कुछ, तो प्राइमरीली ये सारे लोगों का लिंक चकदा से है, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप SOPs फॉलो कर रहे हो, जस्ट नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ बट द सेक ऑफ द पीपल हु आर लिविंग अराउंड यू ना। तो कोशिश करें कि आपके जो जो भी आपका सर्कल है वो लिमिटेड रहे, और जिस सर्कल जो सर्कल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है उससे आप दूर दूर रहें, खासतौर पे जो स्टाफ के लोग जो रोज़ काम करने आते हैं चकदा से बाहर से। सो प्लीज़ ट्राई टू फॉलो द SOPs बिकॉज दैट्स द ओनली वे टू एस्केप फ्रॉम दिस ट्रबल नो, ठीक है। और ट्राई टू प्रीच इट इन योर सर्कल्स एज वेल, कि जो लोग आपकी फैमिलीज हैं, आपकी जानने वाले हैं, तो उन्हें कहें कि भी मतलब क्योंकि अब हमारे पास सुनी सुनाई वाला चक्कर नहीं है ना, बिकॉज हमारे पास तो हमारी प्रेमिसेस में से 4 कंफर्म केसेस हैं और बहुत सारे सस्पिशियस केसेस भी हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, ठीक है। अगर आपको कहीं बाहर शायद जाना पड़ता है तो ट्राई टू फॉलो द SOPs, मास्क शास्क पहने, सैनिटाइज़र पास रखें, हैंड वॉश करें, जो रिकमेंडेड SOPs हैं ट्राई टू फॉलो देम, तो ताकि आप सबको अल्लाह महफूज रखें। ओके सो अच्छा साकिब, मैंने एक ना कमेंट करना था ऑन द ग्रेडिंग ऑफ द लैब ना, जी जिस सर। तरह निमरा कह रही है, तो अगर हर इम्प्लीमेंटेशन इज लाइक एक्चुअली टेकिंग बिग वन, तो उसको फिर पूरा क्रेडिट दे दीजिएगा उस चीज़ का ना। जी सर, बिल्कुल ऐसी ठीक है। हाँ, तो अगर इन हर लॉजिक इफ ही इज गोइंग दैट वे कि उसने पूरे लिस्ट को ट्रेवर्स करने के बाद ही डिसाइड करना है, दैट्स फाइन, सो शी शुड गेट द फुल क्रेडिट, और बाकी लोग भी जिन्होंने इस तरह के अगर उनकी लॉजिक करेक्ट है, तो इफ इट मेक्स द सर्कुलर क्यू तो देन दे शुड गेट द क्रेडिट ना एट दिस स्टेज, एटलीस्ट कोर्स के आखिर तक जाने तक
फिर हम शायद पूरा क्रेडिट इस चीज़ का ना दे रहे हो, फिर हम आपको ये कह रहे होंगे कि ट्राई टू फाइंड और ट्राई टू राइट द एफिशिएंट एल्गोरिथम्स। जब हम एफिशिएंट कहेंगे तो उसका मतलब है कि इफ यू हैव टू चॉइसेस, कि वन चॉइस इज दैट यू कैन डू दिस होल थिंग इन big O one, other choice is कि that will take big O n, so then we would prefer that you should do it quickly and you should be able to finish things within big O one if it is possible. So अभी वाले कॉन्टेक्स्ट में जो है ना, we can give you the benefit of doubt, and because you're also learning, so that's fine for a while. All right, so moving forward, सर मुझे पर इसमें पॉइंटर की समझ नहीं आई। अगर लास्ट फिर भी फाइंड तो करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है उसके लिए भी फिर भी वाइल लूप लगानी पड़ेगी। नहीं, वो आई थिंक किसने लॉजिक बताई थी, इनायत ने प्रॉब्ली बताई थी ना जो थोड़ी देर पहले ना। सर वाइल लूप के बगैर ही बन जाता है। या so that logic actually says कि जो रेड वाले दो पॉइंटर्स हैं फर्स्ट एंड लास्ट, ये जिसको वो रेफर कर रहे हैं एज हेड एंड टेल, so these need to be stored, these need to be created as part of the linked list ना। as जब आप लिंक लिस्ट बना रही हैं तो आप सिर्फ उसका हेड रखती है ना सेव, तो अब आप हेड और टेल दोनों ओके, सेव रखें, दोनों शुरू से इनिशियलाइज सही करें। सही सो वो आपको हमेशा याद रहेगा कि आखिरी नोड कहाँ पे ऐड हुआ है ना, यू विल अपडेट योर लास्ट ये टेल वाला पॉइंटर। सही। ठीक है, सो उससे फायदा क्या होगा कि आपके ओके बहुत सर, आप समझ आ गई। लास्ट यस पे जाके आपने परफॉर्म करने हैं ना। देखिए मतलब उसका थोड़ा सा फायदा होगा, ये फायदा होगा कि लास्ट पे ही जाके जो काम परफॉर्म करना है वो तो ईजी हो जाएगा, बट अगर आपने काम सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट पे करना है उसके लिए देन यू विल हैव टू गो थ्रू द होल लिस्ट। ओके, यस। okay, any other comment or question till this moment? So if not, then let's try to talk about another thing which is a little new for us, and probably it will take few more weeks कि हम उसके साथ साथ चलते रहेंगे. So the next data structure which we want to study is known as tree. Okay, so tree is a non-linear or multi-dimensional data structure. It's dynamic. By dynamic, I mean that it grows and shrinks as the new data comes in and gets deleted. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लिंक लिस्ट में आप नोट्स कभी भी ऐड कर सकते हैं, कभी भी डिलीट कर सकते हैं, सेम वे, और किसी पॉइंट पे जाकर कर सकते हैं, तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ कैन हैपन विद द ट्री. सो इट्स डायनामिक इन नेचर. Its memory is allocated and deallocated on the runtime. Plus, it gives us the provisions to grow in multiple directions, multiple dimensions, or multiple branches, which we'll see in a while. So if you recall, which I'm almost sure, 99.9% sure कि आपने जिंदगी में ट्रीज कहीं ना कहीं देखे होंगे ना. तो ट्री किस तरह का होता है? ये सर जमीन है, इस तरह का। बट इसका इस तरह का होता है. देन इट ग्रोज दिस वे, दिस वे, दिस वे, दिस वे. ठीक है, दिस इज हाउ इट ग्रोज. और अगर आपने वैसे ना आजकल या किसी ऐसे खासतौर पे स्प्रिंग सीजन में इफ यू लुक एट द ट्री वेरी क्लोजली, तो ईच ब्रांच, या आप कभी आई डोंट नो आपने कभी ड्राइंग का कोर्स पढ़ा है स्कूल में या नहीं पढ़ा. मैं जब स्कूल में था तो मैंने ड्राइंग का कोर्स पढ़ा था. सो what we used to do is that each branch ends with a leaf. साकिब, आपके इलाके में भी इस तरह के ट्रीज होते हैं? यस सर. और बाकी लोगों के किसी के इलाके में इस तरह के ट्री ना होते हो, किसी और शेप के होते हो? सो दिस इज द काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी जिसमें ट्री हो सकता है. और फिर यहाँ पे नीचे क्या होता है, जमीन से नीचे क्या होता है, इसकी जड़ें होती हैं. ठीक है, सो आप I'm sure that you know कि tree की जो growth है that starts from this point. So the fundamental structure जिसके ऊपर tree बनता है that is known as the root. जो end points होते हैं जिनकी further growth नहीं होती,
they are known as the leaves. और फिर दरमियान में क्या हो रहा है, दरमियान में देयर आर सो मेनी थिंग्स, ये जिनको मैं ब्लू से हाईलाइट करने लगा हूँ, इन सब को हम कलेक्टिवली कह सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द ट्री विच आर देयर। ठीक है, तो वन थिंग विच आई एम ऑलमोस्ट श्योर इज दैट आपने इस तरह का ट्री तो देखा होगा। आपने कभी उल्टा ट्री देखा है कि जिसकी रूट ऊपर हो और ब्रांचेस नीचे आ रही हो? नो सर। और जो देखा है वो है अभी तक नहीं देखा है। अभी तक नहीं देखे। तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप ट्री को उल्टा कर दें, तो विच इज़ वेरी डिफिकल्ट ना। तो उसका आसान तरीका है कि आप उल्टे होकर देख लें। आप अगर उल्टे होकर देखेंगे तो आपको ट्री इस तरह नजर आएगा कि जो है ना इट्स गोइंग, आपको ऐसे लगेगा कि ये ना रूट से ना चीज़ें नीचे आ रही हैं। तो और आपको पता है उल्टे काम तो वैसे ही बड़े आसान होते हैं। तो you can give it a try if you want to have that kind of visualization on your own risk. अच्छा, तो जो द काइंड ऑफ ट्री जो हमने देखना है ना, प्राइमरीली वो उल्टा होगा, मतलब उसकी विजुअलाइजेशन उल्टी होगी, अदरवाइज मेमोरी में तो वो जिस तरह आप चाहेंगे उस तरह ही होगा। नो, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस विजुअलाइजेशन को घुमाने की, बात वो शायद घूम नहीं रहा मुझसे। सो इन आवर कॉन्टेक्स्ट, अच्छा इस ट्री को भी अगर आप गौर से देखें ना, तो एक और चीज जो जिससे, बिकॉज सी the tree which we want to study, the data structure, primarily it is somebody who invented the trees got inspired by the nature ना। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आप जो कोड कर रहे हैं वो those will be coming from the nature, from the natural trees. So just imagine कि somebody comes और वो let's say मैं कहाँ पे पॉइंट कट लगा, यहाँ पे ग्रीन कट लगा रहा हूँ कि यहाँ से ना उस ट्री को काट देता है। अगर काट देता है तो व्हाट हैपेंस इज कि रूट अलहदा हो जाती है और रेस्ट ऑफ द ट्री गेट्स सेपरेट ना। जब रेस्ट ऑफ द ट्री कट जाता है तो वो फिर ट्री नहीं रहता, वो गिर जाएगा ना, इवेंचुअली इट विल डाई आउट। ठीक है, सो इन आवर कॉन्टेक्स्ट रूट इज वेरी क्रिटिकल। ठीक है, सो वील हैव टू कीप अ साउंड कंट्रोल ओवर द रूट बिकॉज द एंटायर ट्री विल बी बिल्ट अपॉन द रूट। बिल्कुल इसी तरह नेचुरल होता है कि अगर रूट खराब हो जाए, रूट से आप उसको काट दें या गलती से काट दें या जानबूझ के काट दें, you will actually lose control over rest of the tree. Okay, so in our data structure the similar kind of stuff will happen. So what we'll do is that so we'll create different nodes, बिल्कुल उसी तरह के nodes जिस तरह के हम लिंक लिस्ट में कर रहे थे। और मैंने आपको उस वक्त जब लिंक लिस्ट हम कर रहे थे तो मैंने आपको एक प्रिकॉशन दी थी और गारंटी वारंटी काइंड ऑफ चीज़ भी दी थी that you need to really get a good hands on the implementation of linked list, because you will need to use those concepts in the upcoming data structures, and that guarantee or warranty of precaution is still there. So if due to any reason if you still feel you don't have the full control over the implementation of the linked list, तो आपको इस लैब से पहले उसको करना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्टली ये लैब आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगी जब आप ट्रीज कर रहे होंगे तो। ठीक है, बट आई होप कि आपने जो पहले जमा करवाई वो आपने खुद किए एंड यू हैव द गुड कंट्रोल ओवर दैम। Okay, so each of these yellow places, okay, for example root, अब root जो है that is a connection with the upper part of the tree, वो connection कैसे बन रहा है, उससे आगे branches निकल रही हैं। अब हर जो branch निकल रही है तो we need to remember कि branch से क्या चीज़ आगे निकल रही है ना, जहाँ जहाँ पे connection points हैं, जहाँ से आगे further expansions हो रही हैं, we need to create a node over there. जब ब्रांच ब्रेक होगी आगे दो ब्रांचेस में, we'll create a node at that point. So essentially what we want to do is that, तो हर नोड का पॉसिबिलिटी क्या होगी, उसको याद रखना है कि मेरी यहाँ से कितनी ब्रांचेस आगे जा रही है और किधर किधर जा रही है। ठीक है, रूट से एक ब्रांच निकली, फिर आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, फिर 4 में हो गई, फिर 10 में हो गई। So it needs to, in order to make it a physical natural tree, it needs to keep all those branches intact. अगर वो आपस में properly integrated hai, so then that will remain the tree, otherwise some parts of the tree will start dropping from the tree na? So essentially what we'll be doing is that ये हमारा जो non-linear data structure होगा, its name will be tree, but its start point or its critical point will be a node, or that node is the node whom we'll be referring as the root node.
और जब हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ अगर देखेंगे, दिस नोड मे ग्रो इनटू मल्टीपल ब्रांचेस। सो इससे फॉर एग्जांपल रूट से 3 ब्रांचेस आगे निकल रही हैं, उन तीनों से फर्दर किसी से 2 निकल रही हैं, किसी से 4 निकल रही हैं, किसी से लेट्स से 3 निकल रही हैं। सो दे हैव देयर ओन काइंड ऑफ डायनामिक्स, दे हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज। उनमें से कोई आगे फर्दर ग्रो कर रही है, कोई नहीं कर रही है ना। So, but essentially, in terms of programming, in terms of data structures, all of these connection points will become the nodes. And one node may need to remember addresses of many more nodes. Okay? और अब आप देखें तो अब हर नोड के ऊपर क्या होगा, जिस तरह हमारी लिंक लिस्ट में होता, each node will be holding multiple things. One thing is exactly same which we did in the case of linked list, and that is that it will be holding some data. Essential इसके अलावा it will be holding different addresses. For example, अगर इस नोड से 3 ब्रांचेस निकल रही हैं तो it needs to remember 3 more addresses. फिर अगले नोड पे जाते हैं, it needs to hold some data and it needs to remember some addresses कि आगे इससे कनेक्टेड वाले नोड कौन से हैं। अब ये वाला जो ब्लू वाला ट्री बना रहे हैं, तो this is going to happen inside the memory. This is going to be our data structure whom we'll be calling tree. और उस ट्री नेचुरल वाली ट्री और इस ट्री में सिर्फ फर्क ये है कि वो सीधा अपवर्ड्स ग्रो कर रहा है, इससे हम रूट की तरफ नीचे आ रहे हैं ना। तो इन दोनों में से जिसको भी एक को आप इन्वर्ट करेंगे, फ्लिप करेंगे, their structure will start looking similar. Okay, so this is the kind of very vague level brief introduction of the trees. So let's get into a little bit further detail that how the tree will be looking like. So the fundamental structure, fundamental building block, fundamental component of the linked list was node. The fundamental component of the tree will be a node. So inside a node, we'll store some data, and from that data, we'll extend different branches. Okay. So अब होता ये है कि if I reopen the previous page, तो आप देख रहे हैं ये जो ब्लू वाला ट्री हमने अभी देखा है, इसमें रूट ऊपर है और ये आखिरी वाले नोड्स हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वाले नोड्स हैं या ये वाले नोड्स हैं विच आर नॉट फर्दर ग्रोइंग, इनको हम कहते हैं कि दीज आर द लीफ नोड्स और दीज आर द लीव्स ऑफ द ट्री। बिकॉज बिल्कुल इसी तरह इस तरह नेचुरल ट्री में लीफ जो होता है दैट इज एंड पॉइंट ऑफ द ब्रांच। सो सेम वे दीज नोड्स आर द एंड पॉइंट्स ऑफ माय डेटा स्ट्रक्चर्स, एंड इन नोड से फर्दर कोई ब्रांच एक्सटेंड नहीं हो रही होती। जब इन नोड्स से फर्दर कोई ब्रांच एक्सटेंड होगी तो दे विल नो मोर बी द लीफ नोड्स, फिर ये कुछ और हम इनको नाम देंगे। और एसेंशियली एक हमारा एंड पॉइंट जो है ट्री का अपर साइड जो है दैट इज रूट, and every tree needs to have exactly one root, and then there could be multiple leaf nodes. Okay. uh, any question till this moment? So just give me a minute, just hold for a while. All right, so the fundamental building block of the tree would be node, and the additional thing which we'll need to do in our implementation is then when we'll create the class node, हमने एक तो data वाला component रखना है. So this component is exactly similar to the stuff which we have been doing in the linked list. So उसके बाद we'll have to keep some pointers कि इस जो मेरे पास node है इसकी further कितनी branches मैंने decide करनी है ना. So अभी हम अपनी life को थोड़ा simple रखने के लिए what we want to do is that we want to restrict ourselves to 2 branches. So from every possible node, we can extend the tree into 2 directions. So एक direction को we'll be referring as that this is the left direction or left side of the tree, and the other side would be known as the right side of the tree or right branch of the tree. So we can grow our tree in either of the directions. और चूंकि एक नोड से at most 2 branches निकल सकती हैं, so we'll be referring to this kind of tree as a binary tree. So this kind of tree will be known as the binary tree. मैं रिपीट कर देता हूँ कि बाइनरी ट्री का मतलब क्या होगा. बाइनरी ट्री विल बी ट्री जिसमें हर नोड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, ये एट मोस्ट 2 डायरेक्शंस में ग्रो कर सकता है, which essentially means that for example if this blue node is the leaf node,
then it won't grow in any direction, so its number of branches are 0. So hence वो जो हमारी condition थी कि at most 2 branches, at most 2 branches, so that condition is going to be fulfilled here. Or it can grow in only one branch, जिस तरह left वाला है, तो one branch is again fulfilling the condition of at most 2 branches, or just like the first node it may grow into 2 branches. तो दो से ज्यादा नहीं हो सकती, so such kind of tree will be known as the binary tree. Is everybody okay as far as the definition part of the binary tree is concerned? यस सर। और पहले हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। वो हमने भी डिस्कस करना है कि हम किधर जाएंगे। But essentially as far as structure of the node is concerned, so you have 3 components. One is your data component, और बिल्कुल जिस तरह आप डबली लिंक लिस्ट की implementation कर रहे थे, then you will be having a left pointer and you will be having a right pointer. So ये जो group है, data वाला part, left वाला part, right वाला part, these 3 things will be the essential components of your one node. So अगर left branch है तो उसका एड्रेस, उस नोड का एड्रेस लेफ्ट में होगा। अगर राइट ब्रांच है तो राइट वाले नोड का एड्रेस उस ब्रांच उस पॉइंटर में होगा, और अगर नहीं है तो अगर लेफ्ट ब्रांच नहीं है तो लेफ्ट नल होगा, अगर राइट ब्रांच नहीं है तो राइट नल होगा। और डेटा में जो डेटा आपने सेव किया होगा वो वाला होगा ना। ठीक है, तो अब आप इससे अभी किसी क्वेश्चन पूछा है कि हम लेफ्ट ब्रांच में जाएंगे कि कौन सी ब्रांच में जाएंगे? सर मैंने कहा था कि पहले जब हम वैल्यू देंगे सर लेफ्ट साइड को देंगे या राइट को? राइट, ये बिल्कुल उसी तरह अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा जमशेद। जिस तरह आपके पास सिंगली लिंक लिस्ट है ना, ये डबली लिंक लिस्ट है, तो आप पहला आइटम कहाँ पे ऐड करेंगे? जब जब लिस्ट खाली है तो वो तो अकेला नोड है ना, तो वो हमारा हेड बन जाता था उधर ना लिंक लिस्ट में। तो अब वाले कॉन्टेक्स्ट में दैट विल बिकम द रूट नोड जब अकेला होगा, जब जब लिंक लिस्ट खाली है, व्हेन द फर्स्ट नोड इज कमिंग इन, देन दैट विल बिकम the root node in our context. But once you are done with that, तो अब आपके पास tree empty नहीं है ना, because tree contains at least one node जो root है। उसके बाद अब आपके पास 2 directions है। अब आपको बिल्कुल उस तरह करना पड़ेगा, just imagine कि आपके पास n nodes है एक linked list में। So what you used to do was that n nodes अगर linked list में हैं तो आपने नोड कहाँ पे ऐड करना है? आपने स्टार्ट पे ऐड करना है, आपने सेकंड नंबर पे ऐड करना है, आपने 10वें नंबर पे ऐड करना है, आपने nth नंबर पे ऐड करना है, आपने n-1 पे ऐड करना है। सो ऑल ऑफ दोज वर योर चॉइसेस। ठीक है, सो बिकॉज दोज वर योर चॉइसेस, सो उसी तरह की चॉइसेस अभी हमारे पास हैं, तो वी हैव टू डिसाइड कि हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं कि राइट पे जा रहे हैं। सो इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस विल बी गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, तो वो अभी हम उसको साथ साथ डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, मेक सेंस? Yes sir. Or in fact you have in your implementation you have the freedom in a general binary tree, you can go in either of the directions, so you're not really bound. तो जिस तरह लिंक लिस्ट में भी आप बाउंड नहीं थे कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप इधर भी आपके पास वो वाला पूरा फ्रीडम है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, आप उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। ओके, so let's start with an example that I have some data points whom I want to store in a binary tree, and let's try to see that how the tree will then look like. So let's say I have